हील फाउंडेशन के ऑनलाइन लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जो है तो बहुत खतरनाक, लेकिन इसका नियंत्रण हमारे आपके हाथ में है। जी हाँ, हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। डायबिटीज घर घर पहुंच चुका है और अब तो ये कम उम्र में भी लोगों को पीड़ित कर रहा है। वजह है खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान। डायबिटीज खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है या कहें तो डैमेज करता है। इसके शिकार लोग एक साथ कई समस्याएं झेलते हैं। लोग जीवन भर दवा के सहारे जीने को मजबूर हैं। इंसुलिन और दवा पर निर्भर लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक दवा के सहारे जीना पड़ेगा। डायबिटीज के शिकार लोगों के इन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर हमने आज का एपिसोड तैयार किया है। We kickstart the first session with yoga, and the topic is yoga for diabetes. So if we talk about diabetes, there is basically type 1 diabetes and type 2 diabetes. Type 1 diabetes is, as they ask your genetic history, that whether in your family there is a history of, and a lot of young children are getting type 1 diabetes. There is less effect of yoga on type 1 diabetes, but there is so much more effect of yoga in type 2 diabetes. Because type 2 diabetes generally come, 1, because of stress, 2, because of erratic lifestyle. You're not sleeping on time, you're not getting up on time. See, a lot of people actually say that they sleep on weekends. You know, they basically have very less sleep on weekdays, and weekends they'll be just lying down on the bed. Those kinds of lifestyle you cannot have. When you are supposed to sleep, you need to sleep. When you're supposed to get up, you need to get up. It's very important to have a 8-hour sleep in the night. So if your lifestyle is that you're working in the night and sleeping in the morning, all that affects. Start with Trikonasana or triangular pose. Your hip, so knee is, your ankle is slightly apart from the hip. So this is hip length, slightly apart from the hip. The ankle facing slightly out. Okay. Breathe in. Take your hands up and breathe out and go all the way down. Breathe in. Take your hands up. Breathe out. Go all the way down. Now, when you're going down and you want to hold this pose, you can even hold it, but make sure that you don't hold your breath. So if you are here for 10 to 15 seconds or 30 seconds, you can just keep breathing. 1, 2, okay? So don't hold your breath ever. So that's Trikonasana, going on the right side and then going on the left side. Now, as I said, bring your leg together and go all the way back. Breathe in and breathe out. You come and try to touch your, touch your ground. If you are not able to touch the ground, you can even slightly bend your knee and try to touch the ground. Your abdominal cavity is completely in touch with your thighs. Okay. You can even try to hold your legs and try to bring your head towards the leg. Okay. Breathe in, go all the way up. Breathe out, go all the way down. Okay, so this is which you can do while you are standing. Even all the forward bending pose in which legs is apart, your hands can be up and go all the way down. And keep breathing, keep breathing, keep breathing. Breathe out, come back, okay? So these are the 2-3 poses in standing. और अब वक्त है योर हेल्थ काउंटर का, जिसका टॉपिक है ओरल हाइजीन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी टीथ। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश चौहान। डॉक्टर चौहान ओरल इम्प्लांटोलॉजी, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री और एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के अथॉरिटी माने जाते हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक पब्लिकेशन उनके नाम है। वह एक लोकप्रिय पुस्तक के लेखक भी हैं जिनका टाइटल है
a visual guide to fiber reinforced composite in dentistry. मैं शंकर जी को से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे विस्तृत बातचीत करें कि मिस्टर आर शंकर हील फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर शंकर का जर्नलिज्म में लगभग 3 दशक का अनुभव है। वे कर्नाटका और केरला से प्रकाशित न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर रह चुके हैं। स्वास्थ्य विषयों पर उनकी खास रुचि है और वो इस पर पकड़ रखते हैं। अब तक हेल्थ राइटर्स के 200 वर्कशॉप और 7 नेशनल हेल्थ राइटर्स एंड एडिटर्स कन्वेंशन का आयोजन कर चुके हैं। Modern technology has emerged such that, as you said, it's not a bad experience, it's a pleasant experience also, so there is no problem. So what are the technological leapfrogging that has been done in the field of dental care? Before the technology, I would talk of the human factor, because fear is all about the mind. So it is definitely the progress has been made in terms of dental education for the dentist to be sensitive towards the towards the need of the patient on a psychological basis also. And talking of technology, the machine advancement and the material advancement has been tremendous since the decade of 50s, I would say. Really, the drill and fill approach changed in the 50s and the 60s, and it has been going on progressing. So the machines with which, for example, the ultrasonics cleaner with which the teeth are cleaned, talking at the very basic for the oral hygiene, those have now very sensitive, feedback mechanisms that, it reacts according to the pressure that the dentist puts or is required for the teeth to be clean. So it automatically adjusts the vibrations and the pulses so that the patient feel pain. And, the anesthetics are more refined, more choice of anesthetics are available. And overall, minimally invasive dentistry, there is a thing called minimally invasive dentistry. So that has been into much vogue these days, so that we don't have to cut more. Tooth loss patterns are connected with cornea. How far is it true? When a periodontal disease or separia gets unchecked, then the colony of the resident bacteria that develop there, that grows into something else. So it is like that. When the brush is not done properly for 24 hours, you may have a certain group of organisms in the mouth which may not be so harmful. But as it progresses, 48 hours, days, weeks, months, then what happens? It becomes very, very much a permanent resident in the mouth. So, and that if checked, not checked, like patient doesn't go every 6 months for checkup, or is fearful, or is avoiding dental treatment for some reason, then that becomes more and more, and then the plaques go on going in the blood system, and then patient typically may lose lower anterior teeth, lower front teeth, for which again I have devoted much time in writing in my book. And then they typically lose their first molars, from which 60% of chewing is being done. So really, all the parts in the body, all the organs are connected, and we really must take care. Life of animals even depends on teeth. If animal loses teeth, they lose life. It's almost like that. We now enter session 3. जैसा कि आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज रिमिशन पे, ये सचमुच होता है या एक मिराज है? ये क्या है ये डायबिटिक रिमिशन? देखिए, जो वर्ड है जिसको कहते हैं हम लोग रेमिशन, डायबिटीज रेमिशन, उसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है, अगर उसकी वो 3 महीने की ब्लड शुगर 6.5 से नीचे रहे फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, तब इसको हम लोग रेमिशन कहते हैं। कई लोग इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। तो रिवर्सल होती नहीं, बिकॉज डायबिटीज एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो जो है इट इज गोइंग ऑन प्रोसेस, थोड़े दिनों के लिए हो जाएगी, मे बी जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं। रेमिशन का मतलब ये है कि कितने पीरियड के लिए ये कम हो। एक अगर आप मुझे 2-3 मिनट दें तो मैं आपको बिल्कुल इसका जो समझाऊं कि बेसिक क्या है और क्यों इसके बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी हम करते हैं, उससे हमारे शरीर में जाती है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है और उसमें इंसुलिन का योगदान होता है। लेकिन यही अगर हम बैलेंस रहता है, हम खाना खाते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ठीक रहता है। डायबिटीज का कारण क्या माना जाता है कि जब हम खाना बहुत खाते रहे
एक्सरसाइज ना करें तो एक्स्ट्रा फैट या जिसको कहते हैं हम एक्टोपिक फैट, ये लिवर के ऊपर और पैंक्रियाज के ऊपर जमा होने लगती है और इसके जमा होने से इंसुलिन की कार्य क्षमता कम होने लगती है और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है रेमिशन में कि यही जो 10 से 15 किलो वजन है, अगर हम इसको कम कर लें बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज, बाय मींस ऑफ ए डाइट, बाय मींस ऑफ ए जो भी 2-3 तरीके हैं, तो हम इस रेमिशन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या कि फैट डिपॉजिट हुई पैंक्रियाज में, तो बीटा सेल जहां से इंसुलिन बननी है उसने अपना काम कम कर दिया, काम करना कम कर दिया तो इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो गई और इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, ब्लड शुगर। लेकिन ये जरूरी नहीं है, 2-3 चीजें हमेशा याद कर लें कि हर किसी आदमी को रेमिशन नहीं हो सकता। Can you tell us more about the diabetic prevention control project with National Health Mission and which is supported by the World Diabetes Foundation Denmark? What exactly do you do? Actually, sir, we have started in Uttar Pradesh a pilot project Kanpur with the 57,000 pregnant women. Okay, so outcome around 16% of the pregnant women was detected with diabetes. So we call it the diabetes in pregnancy. We also call it GDM, gestational diabetes mellitus. So after that motivation from this pilot for Kanpur, the government expanded it into the 50 districts. So now in the Uttar Pradesh, every A&M has been given a glucometer and 75 gram of glucose so that she can detect the diabetes during the pregnancy. Okay, and I would like to tell you, Mr. Shankar, this is the only guideline which is based on the DIPSI criteria. Okay, this is Make in India project, where the guideline is not from IDF or ADA or any foreign organization, but this is the guideline which has been made by Diabetes in Pregnancy Study Group in India and has been adopted by Government of India. डॉक्टर साहब, मैंने कई लोगों में देखा है और पढ़ा भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट से पहले जो फास्टिंग का टेस्ट कराते हैं वो ज़्यादा होता है और ब्रेकफास्ट के बाद वाला टेस्ट जो है वो उसमें लेवल कम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये नॉर्मल चीज़ है? ऐसा अक्सर होता है कि लोग जो खाली पेट शुगर कराते हैं और जो खाने के 2 घंटे बाद, नाश्ते के 2 घंटे बाद शुगर कराते हैं, तो नाश्ते के बाद वाला शुगर या ग्लूकोज लोड के बाद वाला शुगर जो है वो कम आता है। इसकी कई सारी वजह हो सकती है। एक तो शुगर कितना बढ़ता है वो निर्भर करता है क्या चीज़ खाई। अब जब हम डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करते हैं तो हम आमतौर पे कहते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करिए। अक्सर ये होता है कि लोग घर में अलग अलग चीज़ें खाते हैं, नाश्ता लोग अलग अलग करते हैं, तो शुगर कितनी बढ़ती है ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपने क्या खाया है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि हर चीज़ खाने से शुगर एक जैसी नहीं बढ़ती। बेशक उसमें उतना ही कार्बोहाइड्रेट हो या उतनी ही कैलोरी हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जिस चीज़ में फ्रूट फाइबर होता है, तो ऐसी चीज़ें खाने से शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी मात्रा में आपने कैलोरी कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिव लिया तो आपकी शुगर उतनी ही बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक तो निर्भर करता है कि क्या खाए। अगर चीज़ उसमें हाई फाइबर कंटेंट होगा या लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, जैसे खाली सब्जियां खाई होंगी, सलाद खाया होगा, तो शुगर धीरे धीरे बढ़ता है। It is said that poor control of diabetes during pregnancy increases the chances of birth defects and other problems. It can also cause serious complications for women. What are the precautions to be taken, Dr. Anjali? So diabetes in pregnancy comes in 2 contexts. One is a woman having diabetes prior to pregnancy and then she becomes pregnant, or there is something called as unmasking of mild impairment of carbohydrate metabolism, which will get precipitated by pregnancy. Now, this was typically called as gestational diabetes mellitus, or diabetes that is caused or brought in by pregnancy. Now, there are certain changes जो अपनी बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस हो जाती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, या जितना इंसुलिन प्रेगनेंसी के लिए बढ़ना ज़रूरी है उतना इंसुलिन नहीं बढ़ पाता है।
तो इन केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम कहते हैं ये होता है। टिपिकली जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस 24 वीक्स के बाद होता है, 20 से 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद टिपिकल प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज होता है। We are now in another 3 or 4 months we are entering into a festive season, and then you have a lot of advertisements coming that if you are diabetes, don't worry, this is a sugar-free laddus, sugar-free jalebis, sugar-free this, sugar-free that. So how safe are artificial sweeteners? It's not safe. I will suggest, this is my personal opinion. At the same time, research also says sugar-free, they have other side effects. It raises your blood sugar, though calorie wise they say that the sugar free means you will not get calories. Okay, so calorie wise you can restrict your calorific intake by taking artificial sugars, but it raises your blood sugar level. At the same time, it causes lots of side effects, so it's better to avoid those sugar free sweets. It's my request to my government to ban such kind of advertisement of selling the sweets in name of sugar free for diabetic or for heart patient or for obese people, because in India there is no regulation to stop such kind of advertisement, but these are not good for anybody. It causes cancer also.